Welcome to DSEJ Home Classes, an attempt to connect learner with instructor, a digital initiative by Director School Education, Jammu. Today I am going to take up Unit 1 of Zoology. It's Chapter 4. Chapter 4 is about reproductive health, and today I am going to take its second part, which belongs to the topic population. What is population? The total number of individuals of one species present in a particular area at a particular time is called population. एक ही species का total number, एक ही species, for example, only human beings, then only dog, only cat population. So किसी भी एक species का number, for example, only rose plant, number of only rose plant in a particular garden or in a particular area like in Jammu or somewhere else. So कहीं पर भी किसी भी एक particular area में किसी भी एक species का total number कितना है किसी एक time period में, जैसे human population का count इंडिया में कब हुआ 2001 में. So 2001 टाइम पीरियड भी लिखना जरूरी है. इंडिया लिख रहे हैं तो दैट मीन्स ए पर्टिकुलर एरिया, उसमें टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स स्पीशीज हो गई. So that means total number of individuals of one species present in a particular area at a particular time is called population. Now next is, what is population explosion? When a population double itself in a very short period of time. थोड़े ही टाइम पीरियड में जब पॉपुलेशन अपने आप को डबल कर ले या रैपिडली इंक्रीज करे या एक्सप्लोड कर जाए, हम कहें कि उसका नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. That is the rapid increase in population over a relatively short period of time. Over a relatively short period of time is called population explosion. For example, जैसे world population 2 billion थी 1900 में. That means from the start of human evolution, जब humans इस earth पर आए, round about in BCs, पहले BCs, फिर उसके बाद ADs क्रॉस की, तब तक 1900 तक इतने सारी सेंचुरीज, इतने सारे साल में ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी हुई 2 बिलियन. बट इन 2000 मतलब 1900 से 2000, दैट मीन्स ओनली 1 सेंचुरी, उसमें ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी हो गई 6 बिलियन. तो रैपिड इंक्रीज हुआ ह्यूमन पॉपुलेशन का, इसको हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. Now next is population trends in this world or in India. First is world population. As I have already told you, in 1900 it is 2 billion, whereas in 2000 it reaches up to 6 billion. It reached up to 6 billion. Then Indian population. In 1947 it was 350 million, whereas in 2000 it reaches approximately 1 billion, and by May 2000 crossed 1 billion. According to 2001 census report, population growth rate जो रहा वो कितना था 1. जो अब growth rate है वो कितना हो गया है 1.7%. कब था ये? 2001 सेंसस में बोला गया कि 1.7% ग्रोथ रेट है ह्यूमन का. दैट मीन्स कि 33 इयर्स में ही ये अपना नंबर डबल कर लेगी. दैट मीन्स कि 2001 में अगर मई 2000 में 1 बिलियन थी, तो अभी 2001 के बाद 33 इयर्स में इसने अपने आप को कितना कर लेना है? डबल कर लेना है. दैट मीन्स 17 इंडिविजुअल्स पर 1000 पर ईयर ये इंक्रीज करेगी. Now, what are the consequences of overpopulation? अगर overpopulation है तो उसके consequences क्या होंगे? नंबर 1, अगर large number of individuals होगा, that means किसी भी family में large number होगा, offsprings का number large होगा. अगर offsprings का number large है तो food scarcity हो जाएगी. Large families face shortage of food, जिसकी वजह से malnutrition होगी, जो इस टाइम पर prevalent एक थ्रेट है इस वर्ल्ड के लिए कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो फिलहाल फेस कर रही है वाकई में किसको? मैलन्यूट्रिशन को. दैट मीन्स न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज. देन स्पेस लिमिटेड हो जाएगी, लिमिटेड स्पेस.
लिविंग स्पेस जो है उसकी शॉर्टेज हो जाएगी, जिसके कारण हमें फॉरेस्ट्स और एग्रीकल्चरल लैंड्स को कट करना पड़ेगा उनको रेजिडेंशियल एरियाज में कन्वर्ट करने के लिए। और जब हम फॉरेस्ट और एग्रीकल्चरल लैंड्स को कट करेंगे या कन्वर्ट करेंगे हम रेजिडेंशियल एरियाज में, हमारे इकोसिस्टम को एक लार्ज डैमेज होगी, एक ह्यूज, एक ड्रास्टिक, एक डेंजरस डैमेज होगी हमारे इकोसिस्टम को। हमारे जो फूड चेन्स हैं वो डिसरप्ट हो जाएंगी। देन अगर लार्ज ओवर पॉपुलेशन होगी, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होगा, यूथ का नंबर लार्ज होगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम राइज होगी। देन एजुकेशन स्टैंडर्ड्स लोअर हो जाएंगे, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम इंक्रीज होगी और मेडिकल सप्लाईज भी कम हो जाएंगी। देन व्हाट आर द रीजंस फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो क्यों रहा है? ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर रही है डे बाय डे, लीडिंग टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसके कुछ मेन रीजंस हैं। नंबर 1, डिक्रीज्ड डेथ रेट, डिक्रीज्ड एमएमआर। डिक्रीज्ड डेथ रेट मतलब डेथ रेट जो है वो पास्ट 50 ईयर्स में बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ है, डेथ का नंबर डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज्ड एमएमआर, दैट मीन्स मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मीन्स मदर, mortality means death rate. Decreased IMR, I means infant, I stands for infant. Infant is a small child from birth up to 6 months of age. The child is called as an infant. Infant का death rate, mortality means death rate. Increased birth rate and longevity. यहां पर आप बेटा 2 को कन्वर्ट करके 4 कर सकते हो या सिंपल फॉलोइंग मेजर रीजंस कर देना आप। द फैक्टर लीडिंग टू डिक्रीज्ड डेथ रेट। अब डेथ रेट क्यों कम हो गया, चाहे वो हम कॉमन डेथ रेट का बात करें या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करें या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें, तो वो डेथ रेट कम क्यों हुआ या बर्थ रेट इंक्रीज क्यों हो गया? क्योंकि डिजीजेस को कंट्रोल कर लिया गया। अभी फिलहाल एक पेंडेमिक फैला हुआ है, उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, बट क्योंकि उसकी वैक्सीनेशन नहीं है। अगर उसकी वैक्सीनेशन जब तक मिल जाएगी, अभी बहुत सारी कंट्रीज उसकी वैक्सीनेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही हैं, जब वो मिल जाएगी तो वो भी कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन ऐसे ही बहुत सारे डिजीजेस पहले भी पैंडेमिक्स हुए, पहले भी एपिडेमिक्स हुए, तो उनको कंट्रोल कर लिया गया। देन अवेयरनेस एंड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, improvement in medical facilities, ensured food supply in emergency situation, etc. All this has also resulted in an increase in the longevity of an individual. Now, to control population, there are various birth control methods which we have to study here in this chapter. This next topic is birth control methods. What are these birth control methods? It is the regulation of conception. What is conception? जब fertilization होती है, fertilization of ovum and sperm in the tract fallopian tube of female. और उसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट है, जो डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा, वो जाइगोट यूटेरस में इम्प्लांट होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? कंसेप्शन। द रेगुलेशन ऑफ कंसेप्शन बाय प्रिवेंटिव मेथड्स। हमने उस कंसेप्शन को या उस फर्टिलाइजेशन को ही प्रिवेंट कर देना है। उसके लिए हम वेरियस प्रिवेंटिव मेथड्स यूज करेंगे या डिवाइसेस यूज करेंगे टू लिमिट द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, ताकि ऑफस्प्रिंग्स का नंबर जो है वो लिमिट में रह सके। और इसी रेगुलेशन को हम क्या बोलेंगे? बर्थ कंट्रोल मेथड। Now various birth control methods are, number 1 is natural methods. It includes avoiding chances of ovum and sperm meeting. यहाँ पर इस मेथड में ओवम और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन को नेचुरल मेथड से प्रिवेंट किया जाएगा, एंड द फर्स्ट वन इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस. As we already know that in the menstrual cycle, on the 14th day, ovulation takes place. जब ओव्यूलेशन होती है, ओवा सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है फ्रॉम द ओवरी एंड इट एंटर्स इनटू द फैलोपियन ट्यूब. So that 14th day
approximately 2 days before and 2 days after that, we can say कभी भी ovulation का time थोड़ा सा vary कर सकता है, not exactly on 14th day, 2 days before or 2 days after. So during that days जब female ज़्यादा conceptive है, उस time पर किसी भी couple को avoid करना है या abstain करना है from coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle when ovulation is expected to occur. Then another method is coitus interruptus or withdrawal. It is a method in which male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculation so as to avoid insemination. Before the release of the sperms, what is ejaculation? That is the release of sperms into the female vaginal tract. Before ejaculation, the male partner withdraws his penis to avoid insemination, to avoid the entry of the sperm into the vaginal tract. By this method, the fertilization of sperm and ova can be prevented. Then another method is lactational amenorrhea. After giving birth to a child, a mother is called as in lactation period because she is producing milk at that time for the baby for about 6 months after parturition. During that period, there occur no ovulation. Their chances of ovulation are very low. That means almost nil. And during that period, the chances of conception are almost nil. And the side effects of natural methods are also nil. Then another one is barrier methods. In this method, ovum and sperm are prevented from physically meeting using barriers just as wall between the two. कोई भी wall create कर दी जाएगी between the two so that they cannot meet. First is condoms. Condoms are barriers which are used to cover the penis in the male, and same way condoms are used in the vagina or cervix and cervix in females. It prevents the deposition of ejaculated semen into the vagina of the female. Then another is diaphragms, cervical caps and walls are the barriers made of rubber that are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during coitus. They prevent the entry of sperms through cervix and they are reusable. Then another one is spermicidal creams, jellies and foams. They are also used along with these barriers to increase their contraceptive efficiency. That means preventive efficiency. Then another method is intrauterine devices, commonly called as IUDs. Short form is IUDs. What is the full form of IUD? Intrauterine devices. These devices are inserted by doctors in the uterus through vagina. Non-medicated IUDs like Lippes loop, copper releasing IUDs like copper T, copper 7 and multilode 375, and other hormone releasing IUDs like progestasert, LNG, levonorgestrel 20 are different types of IUDs. IUDs करते क्या है? IUDs phagocytosis करते हैं sperm का. They increase phagocytosis of sperms. That means they engulf sperms or they eat sperms within the uterus. Copper ions released by some IUDs, जो copper ion release होते हैं, they suppress the movement and the fertilization capacity of sperms. Then another method is oral contraceptives. It is hormonal preparation in the form of pills. They are either progestogens or progestogen-estrogen combination. They inhibit ovulation. ये hormones हैं, hormones ovulation को ही inhibit कर देंगे, and implantation as well as other quality of cervical mucus to prevent entry of sperms. Saheli, a new oral contraceptive for females contains non-steroidal preparation which was developed by scientists of Central Drug Research Institute in Lucknow. It is once a week pill having high contraceptive value and few side effects. Then there are surgical methods also. During this, doctors do surgeries either in the male or in the female partner.
First is vasectomy. Like as you see in this diagram, these are the testes, and this is the vasa deferentia arising from the testes enter into the abdominal tract to reach up to the penis. Now this vasa deferentia has been cut here or cut and ligated. यहीं पे इसको कट दिया गया और इसको बेंड करके यहीं पे टाई कर दिया गया है. Tied, cut and tied vasa deferens in males preventing release of sperms. यहाँ से sperms ही release नहीं होंगे. Then in females, it is in case of males, this vasectomy is in case of males, whereas in this case in females it is tubectomy. In this tubectomy, this fallopian tube, these are the ovaries and this one is the fallopian tube arising from the ovaries. Not arising from the ovaries, attached to the ovaries, and they carry ovum from this ovary to the vagina, uterus, and then into the vagina. These fallopian tubes, they are cut and ligated here. यहाँ पर इसको कट किया गया और यहीं पे टाई कर दिया गया बेंड करके, ताकि यहाँ से ओवा ही रिलीज ना हो या फिर यहाँ से स्पर्म्स को एंट्री गेन ना हो. So these are the surgical methods. Then what would be the features of an ideal contraceptive? किसी भी ideal contraceptive के क्या features होने चाहिए? किसी भी कपल को यूज करने से पहले क्या चीजें माइंड में रखनी चाहिए? That they should be user friendly. They should not harm the user. जो भी उसको यूज कर रहा है उसको harm ना करे. They should be easily available. They should be effective and reversible. They should not have any side effect, or they should, if the side effect is there, that should be minimum. That should have least side effect. It should in no way interfere with the sexual drive, desire, or sexual act of the user. Now, what are the various problems of contraceptive devices? जो इसके ill effects हैं वो क्या है? कोई भी contraceptives use करता है तो उससे क्या problems arise हो सकती हैं? Nausea मतलब मन खराब होना, उसको nausea बोलते हैं. Abdominal pain, abdomen में pain होना. Abdomen हो गया हमारी body का diaphragm के नीचे वाला part, और lower abdomen में pain feel होना. Breakthrough bleeding, bleeding हो जाना. Irregular menstrual bleeding, or breast cancer if the hormones are taken in inappropriate manners or without the reference of the doctors, without consulting doctors, that can lead to cancers of the vagina or cervix or even breast cancer. Now the next topics of this chapter, I will take those topics in my third video of this chapter, so watch that one also. And if you face any problem in the understanding of this video, part 2, you can ask me, or you can write it in the comment section. Thank you.